Hello students, welcome. Today we are going to complete remaining alpha amino acid. So we know that in last lecture we had completed the 5 alpha amino acids with their name, value of alkyl group, their structure along with symbol and abbreviation. One is the glycine, second one is an alanine, third one is an phenylalanine, fourth one is an valine, fifth one is an leucine. So these 5 alpha amino acids are completed in a previous lecture. Now today we are going to complete remaining alpha amino acid. Now next alpha amino acid, that is the leucine. अगला बेटे अल्फा अमाइनो एसिड है बेटा ल्यूसीन. सॉरी, ल्यूसीन कल कंप्लीट हो गया ना बेटा. सो नेक्स्ट अल्फा अमाइनो एसिड दैट इज द आइसोल्यूसीन. ISOLEUCINE, isoleucine. Now in isoleucine, value of alkyl group is CH3, single bond CH2, single bond CH, single bond CH3. It is the value of alkyl group in isoleucine. Therefore structural formula of isoleucine is CH3, single bond CH2, single bond CH, CH3, single bond CH, NH2, COH. So it is the structural formula of isoleucine. Now these isoleucine also optically active compound due to presence of chiral carbon. Now this carbon and this carbon, these two carbons are chiral carbon because they are bonded with 4 different group on 4 sides. And the symbol of isoleucine is ILE. isoleucine का बेटा symbol है ILE. I stand for iso, LE stand for leucine. So isoleucine. Now next one, that is phenylglycine. PHENYL phenyl, GLYCINE phenylglycine. Now in phenylglycine, value of R is C6H5. तो बेटे R की जगह लेना है बेटा C6H5. So structural formula of phenylglycine is C6H5, single bond CHNH2, single bond COOH. It is also optically active compound due to presence of 1 chiral carbon. And the symbol used for phenylglycine is PGL. इसका बेटा symbol है बेटा PGL. P stand for phenyl, GL stand for glycine. So phenylglycine. Now next one, it is a tyrosine. TYROSINE, tyrosine. Now in tyrosine, value of alkyl group is OH, single bond C6H4. C6H4 means benzene ring, right? Single bond CH2. तो बड़ा C6H4 का मतलब है बेटा बेंजीन रिंग. अब H4 क्यों ले रहे? इधर बेटा CH2 है, इधर OH है, राइट? सो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ टायरोसिन, OH, बेंजीन रिंग, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, NH2, single bond COOH. It is the structural formula of tyrosine. Now this tyrosine is also optically active compound due to presence of chiral carbon. ये भी बेटा ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि बेटा इसमें भी कायरल कार्बन है. एंड द सिंबल ऑफ टायरोसिन इज TYR. टायरोसिन का सिंबल है बेटा
TYR, right? Now next one, that is serine, SERINE, serine. Now in this serine, value of alkyl group is OH CH2. तो बेटा R की जगह लेना है बेटा OH CH2. So structure becomes OH single bond CH2 single bond CHNH2 single bond COOH. So it is the structural formula of serine. Now this serine also contain the chiral carbon. serine में भी बेटा chiral carbon है. So due to presence of chiral carbon, it is also optically active compound. And the symbol or abbreviation used for serine is SER. इसके लिए बेटा सिंबल यूज होता है बेटा SER. SER stand for serine. So SER, it is the symbol or abbreviation for serine. Now next alpha amino acid, that is proline, PROLINE, proline. Now in this proline, value of alkyl group is CH2 single bond CH2 single bond CH2. इधर भी बेटा एक वैलेंसी फ्री, इधर भी बेटा एक वैलेंसी फ्री. Now this CH2 attach with this CH. So structural formula of proline is CH2 single bond CH2 single bond CH2 single bond CH single bond NH2 single bond COOH. It is the structural formula of proline, and the symbol of proline is PRO. प्रोलाइन का बेटा सिंबल है बेटा PRO, प्रोलाइन. ठीक है. नो नेक्स्ट वन, that is the tryptophan, TRYPTOPHAN, tryptophan. Now in tryptophan, the value of alkyl group is a benzene ring, then 5-sided ring, and this is CH2. It is a benzene ring, it is a 5-sided ring, right? It is a CH2, right? So it is the value of R. Chaliye, so its structure becomes benzene ring, 5-sided ring, CH2 single bond CHNH2 single bond COOH. It is the structural formula of tryptophan, right? It is also optically active compound due to presence of chiral carbon, and the symbol or abbreviation used for tryptophan is TRY. इसका बेटा सिंबल या बेटा एब्रीविएशन है TRY. अब बेटा आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे, मोस्ट ऑफ द अल्फा अमाइनो एसिड कंटेन दी वन कायरल कार्बन. ज्यादातर बेटे अल्फा अमाइनो एसिड में एक कायरल कार्बन है ना. देयरफॉर दे आर फॉर्म 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स. इसलिए बेटा वो क्या फॉर्म करते बेटा, 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स. ठीक है. चलिए नेक्स्ट वन, दैट इज ग्लूटामाइन, GLUTAMINE, glutamine. Now in glutamine, value of alkyl group is NH2 single bond C double bond O single bond CH2 single bond CH2, right? It is the glutamine, value of alkyl group in glutamine. चलो अब बेटे इसको कनेक्ट करो. therefore its structural formula becomes NH2 single bond C double bond O single bond CH2 single bond CH2 single bond CH NH2 single bond COOH. It is the structural formula of glutamine. This glutamine is also optically active compound due to presence of chiral carbon, and the symbol or abbreviation of glutamine is GLU. थोड़ा ग्लूटामाइन के लिए बेटा सिंबल या बेटा एब्रीविएशन है GLU. Now next one,
cysteine, cysteine, cysteine. Now in cysteine, value of alkyl group is SH, single bond CH2. SH थायो ग्रुप, SH होता है बेटा थायो, THIO, थायो ग्रुप. So structural formula of cysteine is SH, single bond CH2, single bond CHNH2, single bond COOH. It is also optically active compound due to presence of chiral carbon, and the abbreviation used for cysteine is CYS. cysteine के लिए बेटा एब्रीविएशन या बेटा सिंबल है CYS. Right? So all these are the neutral अल्फा अमाइनो एसिड. ये सब के सब बेटा क्या है बेटा, न्यूट्रल अल्फा अमाइनो एसिड है. कौन से बेटा, न्यूट्रल अल्फा अमाइनो एसिड्स. राइट. नाउ वी विल सी some examples of acidic alpha amino acid and then some examples of basic alpha amino acid. So after the completion of neutral alpha amino acid, we will see acidic alpha amino acid. Acidic. So what is acidic alpha amino acid? Those alpha amino acid containing more number of carboxyl group as compared to amino group. तो बेटा जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप अमाइनो ग्रुप से ज्यादा रहते उसको बोलते बेटा हम एसिडिक अल्फा अमाइनो एसिड. अब बेटा इसमें दो हैं जो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है. वन इज ग्लूटामिक एसिड, GLUTAMIC, glutamic acid. Now in this glutamic acid, value of alkyl group is COOH. It is COOH, single bond CH2, single bond CH2. So it is the value of alkyl group in glutamic acid. Therefore structural formula of glutamic acid, COOH, single bond CH2, single bond CH2, single bond CHNH2, single bond COOH. COOH, single bond CH2, single bond CH2, single bond CHNH2, single bond COOH. And abbreviation और symbol is GLU. इसका बेटे symbol या बेटा abbreviation है GLU, glutamic acid. Now next one, it is aspartic acid. Aspartic, ASPARTIC, aspartic acid. Now in aspartic acid, the value of alkyl group is COOH. It is COOH, single bond CH2. COOH, single bond CH2. Therefore its structural formula is COOH, single bond CH2, single bond CH, NH2, single bond COOH. Alright, and the symbol or abbreviation used for aspartic acid is ASP. Aspartic acid का बेटा ASP. Now both this glutamic acid and aspartic acid, they are optically active compound due to presence of chiral carbon. अब बेटा अगर आप ये दोनों को देखेंगे तो बेटा इसमें दो कार्बोक्सिल ग्रुप है और बेटा एक एक अमाइनो ग्रुप है ना बेटा. सो कार्बोक्सिल ग्रुप दो, अमाइनो ग्रुप बेटा एक. देयरफॉर सच अल्फा अमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड एसिडिक अल्फा अमाइनो एसिड. ओके, एनी डिफिकल्टी अप टू हियर? नाउ वी विल सी बेसिक अल्फा अमाइनो एसिड. बेसिक, तो बेटा बेसिक अल्फा अमाइनो एसिड. What are basic alpha amino acid? Those alpha amino acid containing more number of amino group as compared to carboxylic group. तो बेटा वो अल्फा अमाइनो एसिड
जिसमें बेटा अमाइनो ग्रुप कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप से ज्यादा होते हैं, दैट अल्फा अमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड बेसिक अल्फा अमाइनो एसिड। अब बेटा इसमें हमको 3 पढ़ना है। फर्स्ट वन इज आर्जिनाइन, ARGENINE, arginine, right? Now value of alkyl group is NH2 positive, double bond C, single bond NH2, single bond NH, CH2 3 times. NH2 positive, double bond C, single bond NH2, single bond NH, single bond CH2 taken thrice. Therefore, structural formula of arginine, NH2 positive, double bond CNH2, single bond NH, single bond CH2 taken thrice, single bond CH, single bond NH2, single bond COOH. It is the structural formula of arginine and its symbol or abbreviation is ARG. इसका बेटा सिंबल या बेटा एब्रीविएशन है ARG, arginine। ठीक है, चले नेक्स्ट वन, दैट इज द लाइसिन, LYSINE, लाइसिन। नाउ इन लाइसिन value of alkyl group is NH2 CH2 4 times, NH2 single bond CH2 4 times. It is the value of alkyl group in lysine. Therefore structural formula of lysine, NH2 single bond CH2 4 times, single bond CH NH2, single bond COOH. NH2 single bond CH2 4 times, single bond CH2 4 times, single bond CH NH2 COOH. Now it is also optically active compound. Arginine, it is also optically active compound due to presence of chiral carbon. Now abbreviation used for lysine is LYS. तो बेटा लाइसिन के लिए बेटा जो एब्रीविएशन यूज होता वो है बेटा LYS. सो इट इज अर्जिनाइन एंड इट इज लाइसिन, राइट? नाउ लास्ट वन, दैट इज हिस्टिडाइन, HISTIDINE, हिस्टिडाइन. नाउ हिस्टिडाइन कंटेन द 5-sided ग्रुप कंटेनिंग नाइट्रोजन. ये बेटा 5-sided रिंग, इसमें बेटा नाइट्रोजन प्रेजेंट है एंड इट दिस CH2. 5-sided रिंग, सिंगल बॉन्ड CH2, राइट? देयरफॉर इट्स स्ट्रक्चरल फार्मूला 5-sided रिंग, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CHNH2, सिंगल बॉन्ड COOH. 5-sided रिंग, सिंगल बॉन्ड CH2, single bond CHNH2, single bond COOH. It is the structural formula of histidine. Now this histidine also optically active compound due to presence of chiral carbon and the symbol used for histidine is HYS. इसके लिए बेटा जो सिंबल यूज करते बेटा HYS. अब बेटा ये तीनों को देखो आप, these compound contain more number of amino group as compared to carboxylic group. इधर देखो आप, अमाइनो ग्रुप 1, 2, 3 और ये बेटा 4, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप 1, राइट? अब इसमें देखो अमाइनो ग्रुप 1 और एक बेटा 2, कार्बोक्सिलिक ग्रुप 1. इसमें देखिए आप N अमाइन, NH अमाइन, NH2 अमाइन. तो बेटा NHN NH2 अमाइनो ग्रुप बेटा 3 है, मगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप 1 है. सो हियर अमाइनो ग्रुप्स आर मोर देन carboxylic group, so such alpha amino acids are called basic alpha amino acid. So today we will stop here.
tomorrow we will continue.